Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. Till date, we have done tangent, normal, length of tangent, length of normal, length of subtangent, and length of subnormal. We have discussed the polar curves as well as the Cartesian curves. Today, we will discuss one more important relationship in the length of perpendicular from the pole to the tangent and the radius vector. So let us revise some basic part and continue. A relation in x and y is called Cartesian equation of curve. General and example I write. Similarly, a relation in r and theta is called polar equation of curve. One plus cos theta, etc. Okay. Again, length of perpendicular from a point x1 y1 on the line ax plus by plus c plus c2. You know that suppose this is the point P, x1 y1, and this is the line ax plus by plus c equals to 0. Suppose this is n. So Pn is given by, as you know that this is ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. Length is always positive, so we consider the modulus sign. This formula, you people know that it is given in two-dimensional geometry. So if a point is given, line is given, so we can drop a perpendicular from the point on the line. So this length is given by this formula. You just replace x and y by x1 and y1. So it is ax1 plus by1 plus c upon root a square plus b square. If P is origin 0, 0, then Pn will be c upon, because x1 y1 0, so it is c upon under root a square plus b square. Okay. Now, sometimes the point is given in general and equation of line is the standard format. So look at this.
So remember this formula, length of perpendicular from a point on the line. So, and if the point is 0, 0, then formula is reduced into c upon under root a square plus b square. Now we consider polar equation of the curve and length of perpendicular from the pole. So just say length of perpendicular from the pole on the tangent drawn at any point of the pole curve. Okay, ध्रुव से पोल मीन्स ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, और वो स्पर्श रेखा कहां पर है? पोलर कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर. सो सपोज this is the point P, r comma theta, and this is the tangent, you know that. Initial line, this is the pole, ध्रुव, ये प्राथमिक रेखा है, इनिशियल लाइन. पोलर कोऑर्डिनेट्स r कॉमा थीटा किसके रेस्पेक्ट में होंगे? फिक्स्ड पॉइंट्स, जिसको हम पोल कहते हैं. फिक्स्ड लाइन दैट इज प्रारंभिक रेखा, दैट इज इनिशियल लाइन. सो इफ इट इज r comma theta, then this is r radius vector, this is theta in anti-clockwise direction, and you know that this is the angle. Remember, this is the angle between the radius vector and the tangent, and it is denoted by phi. Everybody knows this. Now, length of perpendicular from the pole, here is the pole, on the tangent, this is the tangent, so this is here it is. This is M. Okay. This length is denoted by the letter P, small p. So this is the angle phi, this is r, so this is perpendicular with respect to this. So according to figure, OM, that is length of perpendicular from pole this is P, length. Again, in triangle OMP, sin phi equals to perpendicular OM upon hypotenuse curve OP. This is sin phi equals to
OM is small p, this is R, so this is P equals R sin phi. Very, very important result. Okay. So this length of perpendicular is given by P equals to R sin phi. You remember, you know the formula when the angle is phi, but it is in terms of tan. Also, tan phi, you know that R d theta by dr. Okay, so these are the results. Remember it. Tan psi, this angle is psi. Remember this. Here, tan psi is y by x, dy by dx. Okay. And tan theta is y upon x. So these results you have to remember. These are very important results. This is theta, this is phi, this is psi, and psi is theta plus phi. Okay. So see, tan theta y upon x, tan of this, tan of phi r d theta by dr, and tan of psi dy by dx. So these three angles, and the results is given in terms of tan theta, tan psi, and tan phi. And here P equals to R sin phi. What is R? Radius vector. What is P? The small p here, the length of perpendicular from pole to the tangent. Okay. Now we derive an important result. Let us say P equals to R sin phi implies 1 upon P equals to 1 upon R sin phi, 1 upon P equals to 1 upon R cosec phi. I will write 1 upon P square equals to 1 upon R square cosec square phi implies 1 upon P square equals to 1 upon R square 1 plus cot square phi. The formula of trigonometry, 1 upon R square. Tan phi is R d theta by dr. Therefore, what is cot phi? Cot phi is 1 upon R dr by d theta. It is 1 plus 1 upon R whole square. So this is 1 upon R square plus 1 upon R to the power 4. This is R square, and here it is, and this is dr by d theta whole square. 1 upon d square. This result is very important. You have to remember by heart. Sometimes it is asked in the examination. So you just remember this, only this. P equals to R sin phi, then you can derive all the things. Again, if 1 upon R equals to U, then if we differentiate with respect to theta, then it is minus 1 upon R square dr by d theta equals to d by d theta. If we differentiate with respect to theta, then differentiation of 1 by r is minus 1 upon r square, and dr by d theta, that is du by d theta. Therefore, this is 1 upon p square. 1 upon r is u, so 1 upon r square means square of this. This is u square plus. Now,
This is 1 upon r square dr by d theta. So if we square this part, du by d theta whole square, then this will be square of this and it will be r to the power 4. So it is du by d theta whole square. The short form you can consider. Sometimes it is asked. So sometimes in the examination it is asked, prove that 1 upon p square equals to u square plus du by d theta whole square, where u is 1 upon r. So say if it is u equals to 1 upon r, then it is 1 by r square equals to u square. So this term is this. If we square both sides, दोनों तरफ यदि वर्क करते हो तो स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, इट इज 1 upon r to the power 4 dr by d theta whole square, and this is du by d theta whole square. So sometimes it is asked in the examination. So these are the symbols we can see. Now we consider one particular question based on this. Question I write. Find the length of perpendicular from the pole on the tangent drawn at any point of the curve then by r equal to 1 plus e cos theta. Find the length of perpendicular from the pole on the tangent drawn at any point of the curve from the pole on the tangent. ये ध्यान रखना है. Means you have to calculate p. P calculate करना. So let us see. Remember, p equals to r sin phi. आप चाहो तो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, और आप चाहो तो जो अभी फॉर्मूला हमने डिराइव किया था 1 upon p square equals to 1 upon r square plus 1 upon r to the power 4 dr by theta whole square, आप चाहो तो उसे याद रख सकते हो या इस फॉर्मूले से आप इसको डिराइव कर सकते हो. दिस इज p equals to r sin phi. This is 1 upon p. I write it again. 1 upon p, 1 upon r cosec phi, 1 upon p square equals to 1 upon r square, cosec square phi, 1 upon r square, 1 plus cot square phi, and this is 1 upon r square, 1 plus cot square phi. What is tan phi? R d theta by dr. Therefore, cot phi is 1 upon r dr by d theta. Okay, so it is 1 upon r square dr by d theta whole square. What is the curve? Curve is L upon R equals
equals 1 plus e cos theta. Okay, so we want to find this. So differentiating with respect to theta. On differentiating with respect to theta. So it is minus L by R square dr by d theta. This is minus E sin theta. So we substitute. It is this. So this implies dr by d theta equals to minus minus plus. It is R square E sin theta upon L. So it is 1 upon R square 1 plus 1 upon R square dr by d theta whole square. So square of this term. So it is r to the power 4 E square sin square theta upon L square. Look at this. क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब स्मॉल p. so p इक्वल्स टू r sin phi, देन इट इज दिस. और आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो यदि कैलकुलेशन यदि आपको फास्ट करनी है तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ से याद करना पड़ेगा. 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर टू द पावर 4 dr by d theta होल स्क्वायर. यहाँ से सीधा इसको डिफरेंशिएट किया और सीधा सीधा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. इतना यदि याद नहीं होता आपको तो ये बेसिक रिजल्ट है, आपको ये कम से कम याद होना चाहिए. Okay, so let us continue. 1 upon r square 1 plus यहाँ से r square और ये r to the power 4, so it is r square. This is r square e square sin square theta upon L square. 1 upon r square मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं अंदर ताकि ये r स्क्वायर यहाँ से फिनिश हो जाए. दिस इज e स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन l स्क्वायर. दिस इज 1 upon e स्क्वायर. लुक एट दिस. आई होप इट इज करेक्ट. दिस एंड दिस कैंसिल आउट. e स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन l स्क्वायर. हम इस रिजल्ट को यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं क्योंकि इसने ये बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. लेकिन हम थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे और कुछ देखने की कोशिश करते हैं. 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर. दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एल स्क्वायर. दिस इज 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस ई कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर. थीटा को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं. क्यों कर रहा हूं वो अभी बताऊंगा आपको. दिस इज L by R minus 1 equals to e cos theta implies L minus R upon R equals to e cos theta. यहाँ से. So what is the value of e cos theta? L minus R upon R. This is 1 upon R square plus e square minus L minus R upon R whole square upon L square. e cos theta का वैल्यू L minus R अपॉन R. यहां से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है. थोड़ा और इसको घुमाता हूं मैं. वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस इसको थोड़ा सा
ऐसा लिख देता हूँ ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, या इसको सिंप्लीफाई करें, चलो ई स्क्वायर माइनस यहाँ से आर स्क्वायर माइनस एल माइनस आर होल स्क्वायर, so it is L square plus 2LR minus R square upon L square. ऐसे रहने देते हैं इसको, बैटरी यही है। इट इज 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस एल माइनस आर अपॉन आर होल स्क्वायर। ओके, दिस इज 1 अपॉन ई स्क्वायर। So this is the relation in P and R. Remember, L is constant, fixed. So this is the relation in P and R, and this is known as Friedel equation. हिंदी में पदिक समीकरण। This is known as Friedel equation of the curve. This is very important. So what is Friedel equation? This is the relationship in P and R. Now we recall relationship in x and y, cartesian equation, relationship in r and theta, polar, ध्रुवीय, and relationship in P and R, that is parallel. So we have the equation of the curve in three formats. One is Cartesian equation, polar equation, and Friedel equation. So I will consider one particular example. Then if Cartesian equation is given, then how to convert it into polar equation and how to convert it into Friedel equation. If polar equation is given, then how to convert it into Cartesian and Friedel. So you remember, we people know that Cartesian can be converted into polar and polar can be converted into Cartesian. This we have already done by using the relationship x equals r cos theta, y equals r sin theta, and r square equals to x square plus y square, tan theta equals to y upon x. This we have done. Now here our aim is, when Cartesian is given, how to convert it into Friedel equation. Polar is given, then how to convert it into Friedel equation. This is the example. You remember the equation of the curve, it was L upon R equals to 1 plus E cos theta. This is polar curve. So here it is in terms of L and R, and we use this formula, that is 1 upon P square equals to 1 upon R square, 1 upon P square equals to 1 upon R square plus 1 upon R upon 4 dr by d theta whole square. This is the relation in length of perpendicular form. So we use this and this. We eliminate theta and we find the relationship in P and R. Here is the formula. You can see this one. So when polar equation is given, we can find its Friedel equation by using this particular formula. हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, ध्यान रखना, क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास में पी और आर के अंदर, यहाँ आपको डी आर बाई डी थीटा दिख रहा है, तो डी आर बाई डी थीटा मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा और इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा. बट व्हेन
Cartesian equation is given, then how to convert it into pedal equation? Now there are two methods. First, convert Cartesian into polar, then convert it into pedal. Second method, straightforward from Cartesian to pedal. So we consider one example on this. So let us see. Find the pedal equation of the curve r equals to a times 1 minus cos theta. Okay. Remember, extra r equals to a times 1 minus cos theta. This is the equation of cardio. Remember, this we have done, and its diagram, remember, it is like this. Okay. This is the polar equation. If we convert it into Cartesian, then it is little bit difficult. So this is the polar equation. Now we found the pedal equation of this one. We know that 1 upon p square equals to 1 upon r square plus 1 upon r to the power 4 dr by dt whole square. लिखते समय ध्यान रखना ये dr by d theta है, it is not d theta by dr. r equals to a times 1 minus cos theta. On differentiating with respect to theta. थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इट इज डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए साइन थीटा. सो हियर आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इज 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर टू द पावर 4 डी आर बाई डी थीटा, इट इज ए साइन थीटा, सो इट इज ए स्क्वायर साइन थीटा. 1 upon r square plus a square r to the power 4. This is sin square theta. We have to eliminate theta. यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया. अब ये देखो, it is r equals to a times 1 minus cos theta. So from this one we can eliminate this one. So you see how to simplify this. Since r equals to a times 1 minus cos theta, so therefore it is r upon a equals to 1 minus cos theta. This is r minus a upon a equals to minus cos theta. You transpose 1 to this side and take the LCM. So it is r minus a upon a whole square equals to cos square theta. Yes. This is r minus a whole square upon a square equals to 1 minus sin square theta. So the value of sin square theta, is 1 minus r minus a whole square upon a square. It will be this. Or this is a square sin square theta equals to a square. Then it is minus r square plus 2ar.
a square LCM, so it is a square, just open this one, then plus a square minus a square will be cancelled out. Okay, so minus r square, and here it is, this and this will be out. Minus r square minus 2, yes, plus, yes, this is okay. So here you can see a square sin square theta. So what is the value of a square sin square? It is 2ar. 2ar minus r square. This is 1 upon b square. So this is the relationship in P and R. So this is the pedal equation of this curve, that is cardio. कैसे करना है आपको बता रखा है, पोलर इक्वेशन है इसलिए थीटा में है, और हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है क्योंकि P में रिलेशनशिप चाहिए, इसलिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट. यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ये वो फॉर्मूला है जो पोल से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई को बताता है. तो हमने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई किया है. अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कार्टेशियन इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन जिस भी कर्व की है उसकी पैरेलल इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं. इससे पहले एक जिनकी लेंथ को देखते हैं. This we have already done. P, Cartesian curve. This is a tangent. What is the slope? B by B. ध्यान रखना है, मैंने जनरल पॉइंट लिया है x, y, पहले मैं बता चुका हूँ, इसलिए इसकी जो इक्वेशन होगी वो 1 पॉइंट फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1. लेकिन ये पॉइंट जो है वो x1, y1 है. यहाँ x1, y1 की जगह मैंने ये लिखा हुआ है. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, या ऑलरेडी स्मॉल लेटर है इसलिए क्या लिखोगे कैपिटल y माइनस y1, y माइनस y. m मीन्स स्लोप, इट इज dy by dx. Okay, b x minus x1 means it is this. So this is the equation of tangent. थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लिख देता हूँ इसको. Just multiply this. That is y minus y equals to capital X times dy by dx minus x dy by dx. Okay. This is x times dy by dx plus minus 1 times of y. It is, and plus y minus x dy by dx equals to 0. Look at this. It looks like bx plus by plus c equals to 0 line. और आपको याद होना चाहिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल. यहां मैं इसको क्या बोलता हूं, हॉरिजॉन. दैट मीन्स 0, 0 फ्रॉम पोल, दैट मीन्स हॉरिजॉन 0, 0. क्या बताया था, P इक्वल्स टू C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर.
याद है आपको? मैंने फॉर्मूला बताया था ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. But if the point is 0, 0, then p is given by the c upon under root a square plus b square. So here what is c? Compare, then here it is, this particular part. A means this, b means this one. So this will be y minus x dy by dx upon under root a square plus b square. So it is dy by dx whole square plus 1. Note this point. देखो कहाँ से घुमा के लाया हूँ? कार्टेशियन इक्वेशन है, एक पॉइंट है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी, स्लोप हमने यूज कर लिया, पॉइंट जनरल फॉर्म है। इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखा, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इस लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से? ओरिजिन से, जिसको हमने पोल सपोज कर रखा है, दैट इज c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज c, a एंड b। सो हियर इट इज y माइनस x dy by dx अपॉन अंडर रूट dy by dx होल स्क्वायर प्लस 1। ध्यान रखना, पोलर में यदि इक्वेशन पोलर की है तो वहां पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला दूसरा था, वहां पर था 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर टू द पावर 4 डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पर पी का ये वाला फॉर्मूला है, क्योंकि ये कार्टेशियन इक्वेशन है, इसलिए आप पास में दो ऑप्शन है, या तो आप कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करो और फिर वो फॉर्मूला यूज करो, या फिर ये फॉर्मूला आप यूज करके और उसको सिंप्लीफाई करना है। इसलिए किस तरह से डिराइव हो रखा है ये मैंने आपको बता दिया है। नाउ वी कम टू द पॉइंट्स। Consider one question. Find the middle equation of the curve y square equals to 4a times x plus a. P equals y minus x dy by dx upon under root 1 plus dy by dx whole square. Note this formula. This is the length of the perpendicular. Okay. Curve is y square equals to 4a times x plus a. पोलर इक्वेशन होती है तो हमें डी आर बाई डी थीटा चाहिए था, यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन है तो पी में फॉर्मूला देखो आपको डी बाई डी एक्स चाहिए। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स इट इज 2y dy by dx equals to 4a. This implies dy by dx equals to 2a upon y. Okay, now P equals to y minus x dy by dx upon under root 1 plus dy by dx whole square. फॉर्मूला यदि आपको याद नहीं रहता है तो मैंने आपको बताया किस तरह से इसको याद रखना है। टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो और ओरिजिन से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, उससे ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज y minus x dy by dx is 2a upon y. This is root 1 plus dy by dx, so it is
4a square upon y square. ध्यान रखना हम कार्टेशियन इक्वेशन कर रहे हैं. y square minus 2ax अपॉन, यहाँ से एलसीएम जो आएगा अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन y, और ये y कैंसिल आउट हो गया है. नाउ y स्क्वायर यू कैन राइट दिस 4a times x plus a minus 2ax under root y square means 4a times x plus a plus 4a square. x y हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम एलिमिनेट करना है. सो इट इज 4ax, it is minus 2ax, so it is 2ax is left plus 4a square. Let's see this. 4ax minus 2x is 2ax plus 4a square. This is under root 4ax. This is 4a square. 4a square plus 4a square is 8a square and plus 4ax. यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ. 2ax plus 4a square under root 2 common, so it is 2ax plus 4a square. Yes. So this is 1 upon root 2 into root. ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होके 2ax plus 4a square. Look at this. This is 1 by root 2 and 2ax plus 4ax square, 2ax plus 4a square, so this is cancelled out from this side. This is equals to p. Therefore, p equals to this. If we square we get p square equals to 1 by 2 2ax plus 4a square. 2ax plus 4a square. Okay. Now we want to eliminate this because the relationship must be P and R. तो R कहाँ से मिलेगा? R square equals to x square plus y square. R तो यहीं से आएगा और कहीं से आने से नहीं. So R square equals to x square plus y square. And what is y square? Y square, the equation of curve, it was given 4a times x plus a. So this is x square plus 4ax plus 4a square, and this is 2a plus x whole square. Here 2a is common, so it is x plus 2a. This is a times x plus 2a, and this is a x plus 2a. Here it is, so this is r square x plus 2a. So this implies r equals to 2a plus x. So this is r. Okay. So the value of r is x plus 2a. So here it is. Therefore, p square equals to 3r. Remember, this is the equation of parabola. Y square equals to 4a times x plus a.
This is parabola. So this is the Cartesian equation of parabola and this is the pedal equation of parabola. So this is important article. Every year one question is asked on pedal equation. So if polar equation is given, how to convert it into pedal? If Cartesian equation is given, then how to convert it into pedal equation? So just revise all the things, and if you have any difficulty, you just comment in comment box. Happy Diwali. This is the last video before the Diwali. Now we will consider the next part of it after Diwali. So thank you very much. Jai Hind.